Chapter number 8, Algorithm and Flowchart. Children, as you already know that computer is an electronic device that work on a set of instructions called program. Means if we want to do anything about anything in our computer, we need to do in a programming language. Means without programming and without software, we can't do anything in our computer. We can say that a program is a set of instructions given to a computer to solve a particular प्रॉब्लम. मीन्स हम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर को जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो होना चाहिए इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. ओके, द फर्स्ट स्टेप इन जनरेशन अ कंप्यूटर प्रोग्राम इज टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम दैट देन पुट डाउन द स्टेप इन सीक्वेंस टू गेट द रिजल्ट. मीन्स अगर हम कंप्यूटर में कोई भी स्टेप करना शुरू कर रहे हैं, मीन्स अगर हम इफ वी आर प्रेसिंग ए फ्रॉम इन बाय यूजिंग कीबोर्ड वी प्रेस ए, देन फर्स्टली वो जाएगा हमारे मदरबोर्ड में, देन मदरबोर्ड विल बी कन्वर्टेड इन अ बाइनरी लैंग्वेज एंड आफ्टर द आउटपुट वी कैन सी अल्फाबेट ए इन अवर कीबोर्ड. राइट अ प्रोग्राम इन्वॉल्व 3 steps. Write an algorithm, designing a flowchart based on an algorithm, convert the flowchart into a program. If we want to write any program related to our computer, so first we have to write an algorithm. हमें algorithm बनाना पड़ेगा. algorithm means step by step हमें हमारी प्रोसेस लिखनी पड़ेगी. सेकेंड, डिजाइन अ flowchart, फिर हमें algorithm से related flowchart ड्रॉ करना पड़ेगा. एंड आफ्टर इट we have to convert our flowchart into a programming language. Now, write an algorithm. Writing an algorithm. The first step in every programming language is to write an algorithm. Means हम कोई सी भी programming language use करना चाहते हैं तो उसका first step होता है we have to write algorithm. In doing any task, create steps have to be followed in computer. It is termed as an algorithm. An algorithm is a step-by-step process to doing a task. हम जो भी टास्क करना चाह रहे हैं उसको हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखना पड़ता है. It produces an ordered sequence to step the provide solution of a program. For instance, you have been told to prepare a mango shake. You will first think about the step in your mind and then you will implement the step. Let us see if we want to make mango shake in our daily life. So first we have to peel off mangoes, then take required quantity of sugar and milk. Put peels, mangoes, sugar and milk in a mixer jar. Cover the mixture. Switch on the mixture grinder. Wait for all the things to mix well. Lift the jar from the mixer grinding and pour the mango shake in a glass. Means if we are making mango shake, so we have to follow this sequence, particularly sequence. हम without mango cutting mixture अगर ऑन कर देंगे तो हमारा मैंगो शेक नहीं बनेगा. सिमिलरली एल्गोरिथम है. If we want to make a particular program, so first we have to think about a program and we have to make algorithm about our program. The above steps are important to prepare a mango shake. Without these steps, you can't make mango shake. The set of steps to solve a problem is known as algorithm. Means हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स क्रिएट करते हैं वो स्टेप्स हमारी होती है एल्गोरिथम. एल्गोरिथम इज एन इफेक्टिव मेथड टू सॉल्व अ प्रॉब्लम यूजिंग अ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस. मीन्स हमारे को इसमें हमें इंस्ट्रक्शंस को पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना पड़ता है. एल्गोरिथम फॉर्म अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ computing. Before you start understanding a computer language, you need to learn algorithm. Means before you have to understand computer language or programming language, you have to understand how to make algorithm. You will realize that it is easier to understand the logic of a program if it is does through the algorithm. Now, tools of algorithm. The two